Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your GK period. Take out your GK book. Open your book. Open your book. Open chapter number 8. This is your chapter number 8. Largest and biggest. Okay. So, first of all, come to this quick fact box. The Amazon River is approximately 6,450 kilometers long and is the world's second longest river. It starts in Peru, South America. So children, Amazon River approximately कितनी long है? 6,450 kilometers and is the world's second longest river. World की second longest river है. It starts in Peru. कहाँ पर स्टार्ट होती है? पेरू से स्टार्ट होती है, साउथ अमेरिका में. ओके. नाउ कम टू मोर अबाउट द Amazon River has no bridges over it because it runs through dense rainforest. So children, Amazon River पर कोई भी ब्रिज नहीं है बिकॉज ये कहाँ से रन करती है? थ्रू डेंस रेन फॉरेस्ट, एक ऐसे फॉरेस्ट से जहाँ पर बहुत बारिश होती है. मोर देन 3,000 स्पीशीज़ ऑफ फिश लिव इन इट. कितनी स्पीशीज़ रहती हैं फिशेस की? 3,000 स्पीशीज़ रहती हैं, इसलिए वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है. ओके. नाउ come to the questions. So the first question is, name the river that carries the largest quantity of water into the sea. हमको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको उस लॉन्गेस्ट रिवर का आपको एक रिवर का नाम बताना है जो कि सी में ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर ले जाती है. सो इट्स नेम इज इट्स Amazon River. So write AMAZON, Amazon, RIVER, river, Amazon River. Next is, which is the largest island in the world? So children, tell me, the largest island in the world कौन सा है? Yes, it's Greenland. So write GREENLAND, Greenland. Okay. It start with G, so this is G. Okay. Now the next question is, which is the largest mammal in the world? Largest mammal in the world कौन सा है? Yes, it's Antarctic blue whale. So write ANTARCTIC, Antarctic, BLUE, blue, WHALE, whale, Antarctic blue whale. Now the next question is, which is the largest museum in the world? Largest museum in the world कौन सा है children? Yes, the Smithsonian Institution, Washington DC. So write
THE the, SMITH SONIAN Smithsonian, INSTITUTION Institution, WASHINGTON Washington, DC. Okay. Now the next question is, name the largest temple in the world. So the name of the largest temple in the world is Angkor Wat. So write ANGKOR, Angkor, WAT, Wat. Okay. Now the next question is, which is the largest ocean in the world? So tell me children, which is the largest ocean in the world? Yes, it's Pacific Ocean. So write PACIFIC, Pacific Ocean, OCEAN, Ocean. So the next question is, the largest bell in the world is in Moscow. What is it called? So children, largest bell कहाँ पर है? वर्ल्ड की मॉस्को में. और what is it called? हम उसे क्या बोलते हैं? Let me tell you, it's SAR bell. So write TSAR, SAR, BELL, bell. So children, it's a start with T, but हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सार, बिकॉज टी इज साइलेंट. टी कैसा रहता है? साइलेंट रहता है, इसलिए हम उसे सार बेल बोलते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच country has the largest population? Yes, it's China. And tell me children, which country has the second largest population? Yes, it's India. Very good. Now the next question is, name the largest delta in the world. वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? Yes, tell me students. Yes, Ganga river. So answer is Ganges delta. So write GANGES, Ganges, DELTA, delta. Okay. Now the last question is, the largest library in the world is in Washington DC, USA. What is its name? So children, largest library world की कहाँ पर है? Washington DC, USA में. What is its name? इसका name क्या है? Yes, the name is the THE, the LIBRARY, library, OF of CONGRESS, Congress. I repeat, the Library of Congress. Okay kids, so let's revise our answers. First answer is Amazon River. Second is Greenland. Third is Antarctic blue whale. Third is the Smithsonian Institution, Washington DC. Fifth is Angkor Wat. Sixth is Pacific Ocean.
7th is Sarbel, 8th is China, 9th is Ganges Delta, and the last one is the Library of Congress. So children, now you have to paste the picture of these. ओके आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनकी पिक्चर्स को आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, और आप ड्रॉ कर सकते हैं इन योर नोटबुक विद हेडिंग लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क, दिस बुक वर्क इन योर बुक ओनली, एंड पिक्चर्स आपको कहाँ पर पेस्ट करनी है, इन योर नोटबुक, इन योर GK notebook, and send it to me before 2 p.m. Okay class, otherwise you will be marked absent. So that's all for today's class. Thank you.